Hello and a very warm welcome to the brand new edition of Parliament This Week. I'm Kriti Mishra. In a show of steady improvement in its functioning, Rajya Sabha has clocked 106% productivity in the third week of the second half of the budget session of Parliament. Take a look. During the second half of the budget session, the productivity of the upper house has risen from a mere 9.5% in the first week to 82.6% in the second week and now has reached 106% productivity in its third week. The House sat for more than 30 hours and 28 minutes in its 5 sittings held over the week. Normally, the House is scheduled to sit for 28 hours and 30 minutes in a week. The House had lost 1 hour and 10 minutes. However, the House sat extra, skipped lunch for 3 hours, 10 minutes, resulting in an effective zero loss. Question hour on all days except 18th March 2020 functioned to the fullest, with a total of 34 questions being orally answered on the floor of the House. On 18th March 2020, 58 minutes were lost due to the question hour. 72 zero-hour submissions and 33 special mentions were taken up during the week. 3 bills, the Central Sanskrit Universities Bill 2019, the National Commission for Indian System of Medicine 2019, were introduced, discussed and passed by the House. The discussion on these 3 government legislations took place for nearly 7 hours. 56 members participated in the discussion on the bills. The working of 3 ministries, namely Ministry of Railways, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Ministry of Law and Justice were discussed in the week. The discussion on the working of the Ministry of Railways took place on 16th and 17th March 2020, to which Piyush Goyal, Minister of Railways, replied. The discussion on the working of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises took place on 18th and 19th March 2020, to which Nitin Jairam Gadkari, Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, replied. However, the discussion on the working of the Ministry of Law and Justice, which commenced on 19th March 2020, has not been concluded. The discussions extended for about 11 hours and 24 minutes, in which nearly 59 members participated. Honorable Chairman, sir, with your kind permission. The Upper House on Friday passed a resolution expressing confidence in Prime Minister Narendra Modi and solidarity with steps being taken by the government to battle coronavirus. Members of the Upper House vowed to support the steps to contain the spread of the virus. आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है। सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। Government informed the members of the Upper House on Friday that India has a capacity to manufacture 1.5 crore masks a day. MS Chemicals and Fertilizers, Mansukh Lal Mandaviya, said that the production has already started to ensure that there is no crisis-like situation amid coronavirus outbreak. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इनिशिएटिव लिया है और कल सारे राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उसको देखते हुए हमने माई सेल्फ वन मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मेंबर के रूप में कोरोना वायरस के लिए देश में क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रही है या तो कार्य योजना बन रही है, उसके पर हम काम कर रहे हैं। सब पहले से ये 3 रास्ता है जो देश में ये वायरस विदेश से आ जाए, एक एयर रूट, एक सी रूट, तीसरा बांग्लादेश और हमारे नेपाल जैसे देश की बॉर्डर हमारी है। सभी जगह पे सब कड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सभी देश में इफेक्टेड कंट्री से कोई भी मरीज देश में आते हैं या तो कोई भी ट्रैवलर आते हैं उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही सी रूट से माई सेल्फ लुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सर, शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सारे पोर्ट पर इनिशिएटिव लिया है। कोई भी क्रू आए उसको क्वारंटाइन कंपलसरी किया है। पर डे 1.5 करोड़
मास्क बना सके इतनी हमारी कैपेसिटी है, उसका प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो गया। देश में मास्क की कमी नहीं है, देश में ग्लोव्स की भी कमी होने की संभावना नहीं है, सैनिटाइजर भी देश की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और देश में ऐसी कोई भी स्थिति ना खड़ी हो कि देश में क्राइसिस हो, उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। धन्यवाद। Union Health Minister Harshvardhan said in the upper house that antiretroviral drugs are being used on patients of coronavirus. He assured the members that the best possible treatment is being provided to those infected with COVID-19. Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan lauded doctors and paramedical staff of the country that are treating coronavirus patients. While making a statement in the Rajya Sabha on Tuesday, Dr. Harshvardhan also applauded the services rendered by the Indian Air Force and Air India staff who brought back Indians stranded abroad. शायद जो आज हमारे देश में डॉक्टर्स और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और बहुत सारे जो हमारे एयरलाइंस से जुड़े हुए हमारे पायलट्स हैं, दूसरे कर्मचारी हैं और विशेषकर जिन लोगों ने जो हमारे भारतीय लोग विषम परिस्थितियों में इस बीमारी के प्रकोप के रहते भी दूसरे दुनिया के देशों से भारतीयों को वापस लाने का काम किया है और इन मरीज़ों से जिनसे ये इस वायरस का सबसे बड़ा जो बचाव का जो तरीका है वो 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है, उसमें हमारे डॉक्टर्स सारे देश के अंदर जो है बहुत ही गहराई, ईमानदारी, सच्चाई और सब प्रकार की जो रिस्क लेते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसकी सराहना करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द मेरे क्या किसी की भी शब्दावली में नहीं है। Dr. Harshvardhan also underscored that in a bid to contain the spread of the deadly coronavirus, integrated disease surveillance system is keeping a community surveillance on 54,000 people. आप सब जानते हैं कि इस समय इस कोरोना को कंट्रोल करने की दृष्टि से जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके तहत नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आज की तारीख में 54,000 लोगों के ऊपर तो कम्युनिटी सर्वेलेंस रखा जा रहा है, जहां हमारे ये हेल्थ से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, ये लोग इन लोगों को डेली बेसिस पे 2, 3, 4 दिन के बेसिस पे उनके ऊपर पैनी निगाह रखते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके बारे में सारी जांच करते हैं। इसलिए On quarantine facilities, Dr. Harshvardhan said that the best of efforts are being made at central and state levels to provide services to those affected. All over the country, you see right now, we are subjecting not in hundreds but in thousands people coming from various COVID-affected countries to quarantine, and all over the country with the help of the state governments and with the help of the other departments of the wings of the government like Army, CISF, etc., we have located a large number of facilities in the country where these reports are, I would say, they are the exceptions, but they are not the rule. Meanwhile, Anand Sharma of the Congress hailed the efforts made by the government in combating coronavirus. And Manas Munia of the Trinamool Congress asked about the treatment protocols being adopted by the government. By India for the containment of the spread of coronavirus. We do appreciate the steps that have been taken in sync with the WHO protocol, and in particular for the evacuation of the Indian citizens from various countries by the Indian Air Force and the Air India. So we compliment those pilots and the crew. So many countries have been experimenting on the treatment process by the specific drugs in the trial. In US, in Australia, in Germany, in China, they are trying by retroviral drugs which are used in the HIV infections. And recently a report came, even the chloroquine is very effective for the treatment of coronavirus. I want to know, through you, sir, from the Honorable Health Minister, what are the treatment protocol adopted by Government of India and advisories given to the state government in this context?
Responding to supplementary question in the upper house during the question hour, the Union Health Minister said that the efficacy of the antiretroviral medicines on COVID-19 patients is being evaluated by the Indian Council of Medical Research. Our scientists at ICMR, they are in touch with everything that is happening on this particular front all over the world. As far as the retroviral drugs are concerned, we are also using them on some of these patients, and we have given approvals for using them after, you can say, all sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny, not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Rajya Sabha Secretariat has taken several steps to ensure sanitization of the complex. We spoke to the Secretary General of Rajya Sabha. Take a look. We are in the Parliament House complex right now, and joining us is Secretary General of Rajya Sabha, Mr. Deshdeepak Verma. Sir, welcome to Rajya Sabha Television. Tell us about the preventive measures that the Secretariat has taken in view of coronavirus scare. You see, under the direction of our Honorable Chairman, we have decided to put a regime for preventing coronavirus inside the Parliament also. It begins with the thermal screening at the various gates, which we start for everybody, all the employees, and also about the Honorable MPs. This will start. Apart from that, on every gate, the gates where they enter into the outer lobby and the gates where they enter into the Parliament, into the Rajya Sabha, all those points, the sanitizer has been kept with a sign like this so that people are able to use it. The honorable members can use it. And also within the Parliament, within the House also, we have kept two sanitizers on the two sides, which members, as and when they wish to, they can quietly rise and go there and sanitize their hands. So one of the things that Chairman has been repeatedly saying that there's no need to panic. How are you ensuring that in the Secretariat? Yes, what we are saying is that we are issuing an advisory even for our employees to say that they should take all precautionary measures, but there is no need to panic, and they have also been advised not to use public transport and as far as possible use their shared transport, shared vehicles. So all this has been done, and this has been told to them that this is all as a matter of abundant caution, and there is no need to panic on this issue, and we should take all these precautions. Absolutely, sir. Prevention is better than cure. Thank you so much for talking to us. Time for a quick break. Lots more on the other side. Welcome back. You're watching Parliament This Week. Let's take a look at the business transacted in the upper house through the week. The Central Sanskrit University's Bill 2020, which will convert Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth New Delhi and the Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth Tirupati into Central Sanskrit Universities, has received Parliament's approval after it was passed by the Rajya Sabha on Monday. HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said that these three universities will now have more opportunities to spread the knowledge of Sanskrit language not only in India but across the world.
मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, और चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र की, जो हमारे आईसर के क्षेत्र में ये देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। Rajya Sabha on Wednesday passed 2 bills that seek to provide for quality medical education system in homeopathy and promote Indian systems of medicine. And the National Commission for Homeopathy Bill 2019 were also passed in the upper house by voice vote. कई सदस्यों ने कहा है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ इस मेडिसिन का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये काम आयुष ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। कहीं जो बड़े हॉस्पिटल है, एम्स होंगे या दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ इंटीग्रेशन का ऑलरेडी शुरू हुआ है। आखिर इस मेडिसिन सभी का हमारा प्रयास किसके लिए है? तो पेशेंट है तो जल्दी ठीक होना चाहिए। इसीलिए ये प्रयोग सभी जगह अभी थोड़े थोड़े इसमें चालू हुआ है। हमारे जो आयुष नाम की स्कीम है उसमें भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी सभी तरह के डॉक्टर बैठते हैं, जिसको जो पैथी चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए वो लेके हो जाता है। और इंटीग्रेशन का जमाना अभी शुरू हुआ है। The upper house also held extensive discussions on the working of ministries of railways and MSME. अगले 12 वर्षों में हम 50 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार इतना नहीं खरीद पाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है। The House also conducted formal business and several important reports of the committees were also tabled in the House. My colleague Binoy Vishwam. Now let's take a look at the business transacted in the Lok Sabha. The Lok Sabha passed the Appropriation Bill 2020-21, authorizing the government to draw over 110 lakh crore from the Consolidated Fund of India for its working as well as implementation of its programs and schemes. मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों को हम भूल नहीं सकते और सदन इस बात से सहमत भी होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 5 वर्षों की जो रोड मैप है पर्यटन को लेकर, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। और उसका परिणाम है कि भारत में 2019 में 10.89 मिलियन विदेशी पर्यटक आए और 2,10,981 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। और जो घरेलू पर्यटक थे वो 1854.9 मिलियन उनकी संख्या थी। The Lok Sabha approved over 1 lakh crore budget for Jammu and Kashmir for 2020-21 with emphasis on the development of newly carved union territories. Jammu and Kashmir was made a union territory with effect from October 31st, 2019. The budget also proposes to fill up 50,000 vacancies in the government sector. Honorable Member Adhir Ranjan Chaudhary said, "Tell me what's different before August 15th and what is different now?" August 5. क्या बदला? बहुत बदला सर। करप्शन नहीं है अभी। उससे पहले करप्शन ही करप्शन था। ट्रांसपेरेंट टेंडर हो रही है अभी, तब नहीं था। और आज ट्रांसपेरेंट ट्रू डेमोक्रेसी चल रही है। इसीलिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98% का रिप्रेजेंटेशन के साथ चुनाव सफल हुआ। ये भी सुन लीजिए बदला क्या है। टोल गेट ओपन करने के बाद आप लोग कभी टोल गेट को हटाने में तैयार नहीं थे। हटाने के बाद उदाहरण के नाते मैं नहीं बोल रही हूं, मेंबर्स बोल रहे हैं कि सीमेंट के प्राइस क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। मोनोपोली क्या समर्थन देते हुए आप चलाता आपके सरकार। हमारी सरकार तो खुल गए इस मार्केट को। अभी सीमेंट आम जनता को सस्ते दर में मिल रही है। ये बदलाव है। 370 को एब्रिगेशन करके जम्मू कश्मीर विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे एजेंडा में जम्मू कश्मीर में शांति का स्थापना हो, जम्मू कश्मीर में शासन ठीक तरीके से हो, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को सुविधा हो,
लोगों को अच्छे एजुकेशन मिले, लोगों को अच्छे रोड मिले, लोगों को अच्छे हेल्थ मिले, लोग आतंकवाद का गतिविधि कम हो, इसी दृष्टिकोण से लगातार हम काम कर रहे हैं। Lok Sabha passed the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020, which seeks to amend the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. The bill seeks to extend the upper limit for permitting abortions from the present 20 weeks to 24 weeks for special categories of women, which include rape survivors, victims of incest, and differently abled and minors. Lok Sabha also passed the Indian Institute of Information Technology Laws Amendment Bill, which will declare 5 IIITs established under public-private partnership model as institutes of national importance. This will give these institutes the power to grant degrees. मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, और चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र की, जो हमारे आईसर के क्षेत्र में ये देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है. Kriti Mishra, Rajya Sabha TV. Well, that's all we had for you in this edition of Parliament this week. Thanks for watching and stay tuned to Rajya Sabha Television.